Dear 6th class students, open your English book, chapter number 3, Prophet Muhammad, peace be upon him, page number 27. जो खदीजा का सर्वेंट उसने जब देखा कि मोहम्मद की ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड गुड डीलिंग्स, उसने खदीजा को सब कुछ बताया. And Khadija was so impressed that he decided to marry. खदीजा बहुत मुतासिर हो गई. खदीजा बहुत मुतासिर हुई. उसने डिसाइड किया कि शादी करने का फैसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. was so impressed that she decided to marry him. खदीजा बहुत इम्प्रेस हो गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी से, ट्रूथफुलनेस से, गुड डीलिंग से. उसने अपना एक नौकर भेजा था. उस नौकर ने सब कुछ कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ईमानदार है, कितना सच्चा है, उसकी कितनी गुड डीलिंग्स है तिजारत में. तो सब कुछ बताया. और खदीजा ये देखकर, ये सुनकर बहुत इम्प्रेस हो गई. तो उसने शादी करने का फैसला किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. At that time she was 40 and Muhammad was only 25. उस वक़्त जो खदीजा थी उसकी एज 40 थी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 थी. सलमान, ओ इट मीन्स दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी, इसका मतलब कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वेरी यंग था खदीजा से. नॉनी, यस, 50 years younger than खदीजा. 15 साल खदीजा से यंगर था. द मैरिज टुक प्लेस, शादी हो गई. आफ्टर मैरिज द हस्बैंड एंड वाइफ स्पेंड देयर वेल्थ जनरसली. उन दोनों ने, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा ने, मियाँ और बीवी ने अपनी सारी दौलत टू हेल्प द पुअर, गरीबों में बांट दी, गरीबों को खैरत में दी. अपनी सारी दौलत टू हेल्प द पुअर, गरीबों को खैरत में दी. एंड नीडी, और ज़रूरतमंदों को. एंड दे लिव्ड अ वेरी फ्रूगल लाइफ. तब वो दोनों गरीबों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे. जब उन्होंने अपनी सारी वेल्थ गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांट दी, तब वो दोनों गरीबों की तरफ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी. यानी टर्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा इस पर मुखांदर करो. अम पत वोन टर्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सारी दौलत युस ये दौलत दिस गरीबन मज बगराव, तो गरीबन मज आई दौलत सारी बगरान. तो अम पत रूद न अत गरे कहें. दे लिव्ड a very frugal life. All the children, how interesting. How interesting, a rich couple giving all the riches to the poor. ये बहुत इंटरेस्टिंग की बात है कि एक रिच कपल ने सारे जो कुछ उनके पास था वो गरीबों में तकसीम किया, वो गरीबों में दिया, खैरत में दिया. वो हैव नॉट हर्ड ऑफ सच थिंग बिफोर. हमने ऐसा कभी नहीं सुना था इससे पहले. नॉनी, oh yes, the couple would spend most of their wealth for others. उन्होंने सारी वेल्थ जो उनके पास थी, सारी वेल्थ वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दी. एंड लिव्ड ए हार्ड लाइफ, खुद अपनी ज़िंदगी खुद जो उनकी ज़िंदगी थी वो मुश्किल से गुजर गई. उनके पास अब कुछ नहीं था. सलमान, नॉनी, डिड नॉट दे हैव चिल्ड्रन, क्या उनके पास कोई बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं. एंड सलमान, नॉनी, डिडंट दे हैव एनी दे हैव चिल्ड्रन. नॉनी, ऑफ कोर्स दे हैड, उनको बच्चे थे. फ्रॉम खदीजा रहमतुल्लाह सल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट 2 सन्स. खदीजा से प्यारे नबी के 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई. द सन्स नेमली कासिम एंड अब्दुल्ला डाइड यंग. जो उसके बेटे, यानी जब बेटे 2 कासिम एंड अब्दुल्ला वो यंग एज में ही गुजर गए. वाइल ज़ैनब, उम्म कुलसम, रुकैया एंड फातिमा were all married and had children. 4 बेटियों को उसने शादी किया है, तो और उन चारों को शादी उसने की है, तो उनके बच्चे भी थे.
محمد اس کی شادی یعنی ختیجہ کی شادی سے اس کو 3 بیٹے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئی. فاطمہ کو چھوڑ کر باقی سب چھوٹی عمر میں ہی مر گئے. فاطمہ کی شادی اپنے چچارے بھائی حضرت علی کے ساتھ ہو گئی. When Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, was 32 or 33, he started thinking about the universe and its creator. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 32 یا 33 سال کے ہوئے تو انہوں نے دنیا اور اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. ییٚلہِ ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 32 یا 33 وُہُر ووت یہ لوگ یتھ دنیاہس متعلق سوچنے تو بیٚیہِ یتھ کائناتس متعلق سوچنے تو بیٚیہِ یہ بناون وٲلِس متعلق سوچنے. He would spend days together in meditating in one of the cave called Hira. شروع کر دیا ایک غار میں. انہوں نے غار چنی تھی اس نے اس کے لیے. جب one day at the age of 40 when Muhammad was meditating in Hira, an angel appeared before him. جب وہ 40 سال کے تھے اور کر رہے تھے تو ایک فرشتہ ان کے سامنے آیا. اس کا نام تھا جبرائیل. Angel appeared before him and asked him to read. پڑھو. ان کے سامنے آیا اور ان سے پڑھنے کے لیے کہا. تو اس فرشتے نے اس کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں امی ہوں, میں پڑھ نہیں سکتا. The angel embraced him and repeated the same words thrice. Angel نے اس کو embrace کیا اور 3 بار اس نے کہا پڑھو. اس the third time the angel said read in the name of the Lord. پڑھو اللہ کے نام سے, پڑھو اللہ کے نام سے. Muhammad was scared, went home and told his wife. جب فرشتے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اپنے مالک کے نام پڑھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگنے لگا. انہوں نے اس واقعہ کے بارے میں اپنی بیوی کو بتایا. وہ انہیں اپنے بھتیجے کے پاس لے گئی. وہ عیسائی دھرم کا عالم فضل تھا. جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان سنا تو اس نے انہیں بتایا کہ جبریل نے ان کو پڑھنے کو کہا تھا. وہ قرآن کا پہلا ورس تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. قرآن اللہ کی آخری کتاب تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر بن گئے. He related the incidents of him, took him to his nephew.